by the time we have the rest of the people join us, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई सरप्राइज नहीं, सॉरी, स्पॉट प्राइजेस होंगे, पर इस बार it's not going to be against anybody. It's going to be one spot prize to whoever answers the question right. Okay, so we'll be starting with this spot prize session just before the influencers enter and we start with the actual prize distribution. Alright, one question at a time, one answer at a time. Question मेरा होगा, gift उसका होगा, decision भी उसी का होगा. मेरा उसमें कुछ नहीं है. So no favoritism for any rider, no favoritism for any rider clan. Sam वो माइक को म्यूट पे डाल दे. My first question is, one such old motorcycle company who still is in production, has not stopped ever. No. Still in production, yes. Never stopped. Never changed. Sorry? No. सब ले लो, मेरा भी नाम ले लो उसमें. सैम का भी नाम ले लो, मोटो महीने का भी नाम ले लो. Sorry? Somebody said Royal Enfield? Who is that? मैंने क्या बोला था? फेवरेटिज्म काम नहीं, जो सुनाई देगा उस पे जजमेंट होगा. मैंने क्या बोला था? सवाल मेरा, जवाब आपका, डिसीजन उसका, उसको पकड़ लो. मेरा कुछ नहीं है. अब याद रखना, अगर जवाब देना है तो हाथ ऊपर कर लो, जवाब दे दो, बात खत्म करो. ओके, नेक्स्ट स्पॉट प्राइज इज फॉर वन राइडर जिसके बाइक का नंबर कैलकुलेटेड नंबर 9 आता है. सैम, वी हैव 2 पीपल. यस, वो पीछे रेस कर लिया है ना. मैं चूज करूं? ये वाइट. नंबर बताओ बाइक का. 0441. 0441. Is that a total to 9? Fantastic. That goes to you. चुप कर. Alright, my next question. हाथ उठा लेना, मच्छी बाजार मत करना. Can somebody tell me what is ABS? घर पे जाओ तुम. एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम. बुला लूं इसको? सैम, इसको बुला ले रे. सही जवाब दिया उसने. वो आगे इसी के लिए बैठे कि चिल्ला चिल्ला के जवाब दे सके. Can someone tell me what is the main purpose of a motorcycle fairing? ये चिल्ला के बोलेगा तो कुछ नहीं दूंगी, जो लिया है वो दिया है वो भी ले लूंगी वापस. आज सुबह से बड़ी मेहनत से काम किया एक बंदे ने पीछे.
पर तू पर तू वैसे भी बाइकर मेनिया वाला है, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है. रिड्यूस द एयर ट्रैक, सॉरी, एयर ट्रैक रिड्यूस करने के लिए. आर यू श्योर? दैट्स द राइट आंसर. क्या देने का क्या Price? कुछ नहीं, Okay. तालियां बजवा लो बस, हो गया. वो तो बस जांचना चाहती थी कि बाइकर मेने वालों को भी कुछ आता है कि नहीं. मुझे बहुत सवाल पूछे थे यार इस इधर आने से पहले. Alright, my next spot prize is for someone. My next spot prize is for someone जिसकी बाइक का नंबर sums up to number 7. अरे काय तुझं? तू घरी जा. किसी का भी नहीं. Nobody has a lucky number as 7. Sorry? 3 sevens on the number, but it does not come to a total of 7, right? So this goes as a null and void. ये इनको प्राइस देके घर भेजो यार. Alright, my next spot prize. तो कल बोलेगा पनवेल जाना है. पूछ ले इसको होता है क्या 7 सैम. मैं ट्रस्ट नहीं करती इसके ऊपर बिल्कुल भी. I think we should move on to the next question. द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको नहीं देना ना, इसको नहीं देना. गुड जॉब, गुड जॉब. सैम भाई पार्टी देंगे बोल रहा था. 15 जो सीरीज है स्टेट का और 7453 इज द नंबर. सवाल मेरा है, जवाब तुम्हारा है, जजमेंट उसका है, मेरा तो उसमें कुछ टोटल नहीं है. 25 हो रहा है. 2 + 5 7 होता है. वैसे कैलकुलेट करें like adding all the numbers together. No, only the last 4 digits together. All right. Moving on to the next question. Can someone tell me? थर्ड प्राइज तुमको जो देना है दे दो चलेगा. Can someone tell me which is that one bike which is the oldest of all bikes? Oldest of all bikes. Sure? एकदम पक्का वाला. सौरभ, what do you say? Is that right or wrong? सौरभ बोलेगा मेरे को ट्रैक के बारे में पूछो, ये सब मत पूछो. What do you say, Ajay? Is that right or wrong? That's the right answer. Fantastic. मुझे लग रहा है जिस स्पॉट प्राइज मिल रहा है उसके लिए तो तालियां भी नहीं बजा रहे हो, जिसको नहीं मिल रहा है उसके लिए भी नहीं बजा रहे हो. अरे मी कुठे काय बोलली, मला पण नव्हतं माहित रे, मला गुगल बाबांनी सांगितलंय. Ajay, I would also request you if you want to help Aditi in asking few questions. You're good with it, that's why. I think he can do a much better job at it. बहुत सवाल पूछे नहीं सुबह यार, से. तू भी बहुत अच्छा Over question to you, पूछी. अजय. नहीं, मुझे बहुत सवाल पूछे सुबह से. So let's. The game has begun. All right, guys. I hope you're having fun. And okay, the next question. I like that. I like that. I like silence. I like silence. All right. What do you want to ask something? Okay, the oldest Royal Enfield bike. Raise your hands. I don't know. Raise your hands. All right, which one? No. Wait, yeah, year. The oldest Royal Enfield. बुलेट. भाई बोला. Yeah, Bullet Classic. Yeah. Sam, this guy. Okay, listen, I got someone in the crowd who said that I'm doing partiality. To be very honest, I'm handing over whatever is coming in my hand. Okay, it's not that I don't like you or anything. It was whatever was in my hand, I gave it to you. No, it's our choice, right? Who we are selecting for that. Yeah. Good, thank you for your feedback.
For the next question, I'll tell what is the price, okay, right away. There are lights here, okay? Yes. Ajay? The next question are lights here, okay? No partiality. If Or for the anyone is lights. feeling that, yeah. Yeah. But raise your hands and then answer, okay? That's the only request. All right, true or false? All right. Is helmet important for both the people on the bike or only a single person? No, wait. Ajay, choose a person. Yeah, I'm looking at everyone. All right, the girl. And why? For the safety purpose. But why? Head damage नहीं हो. Okay. And how do you wear a helmet? Full face helmet with tight, what we do, a belt tight. All right, perfectly Yeah. fine. Yeah, you can give her the prize. Thank you. Okay, so next one, Ajay. We have got a lot of sleeves now. Let's distribute sleeves now. बुलेट क्लासिक 350 उसकी एक्चुअल सीसी क्या है? Choose some, or change the question now. Guys, listen, मजा नहीं है अगर तुम लोग बोल देते हो आंसर यार. तो उससे अच्छा हाथ ऊपर करो, सिलेक्ट हो गया तो मिलेगा ना प्राइज. I think ask another question now, please. Which is the latest bike in Royal Enfield? The cap one, yes. Himalayan Mana bike 450. लॉन्च नहीं हुआ है. हो गया लेटेस्ट बाइक राइड मोटोवर्स में लॉन्च किया वो लोग. गुड. थैंक यू. Wow, this is trending abroad. How about me trending in India? I wear India. I wear killer. Bro, throwing out all your labels. Well, guess what? I've upgraded. I wear India. I wear killer. Brendan, I would request a really nice technical question from you. Because I don't know if people know what you do, but we will go to that point. But a technical question. Come on. Okay, guys, since you're all ride bikes, I want to ask you a question. Raise your hands before you answer, okay? What do you consider in a bike as a heart of the bike? Think before you answer, okay? I said, what do you consider the heart of the bike? Choose Brendan. You have to choose someone. The boy with the glasses there. Can you hand over him the mic? The engine's piston. No. Why? Give him the mic. Why would you say piston? Like it's the main part of the engine, that's why. Okay. But that's not the right answer. The guy with the glasses, your blue t-shirt. Sorry. How about you, the gentleman with the glasses? Yes? No, sorry. No, this uncle, yeah, done. A guy with a cap here, right in front. The fuel injector? No, you're very close, but the carburetor or the fuel injector? Either or. Choose one. Carburetor. Yeah, you're right. Okay. You just tell me the reason why is it called the heart of the bike? Okay. Since you answered it. So basically it connects your petrol tank
to the engine and to all other critical elements, or basically in biology the vital elements of the motorcycle. If that doesn't function well, or even if the pin goes haywire, Very true, very true. the So, bike won't so work. the carburetor and the throttle body is the main heart of the engine. If you just remove the carburetor or the throttle body, your bike engine doesn't have power or it will not function at all. The right answer, yeah? One more question I want to ask the guys, since you all have taken part in this event, Motomania 2026. Mumbai Biker Mania. Mumbai Biker Yeah, Mania. sorry, Mumbai Biker Mania. Thanks for correcting me, Sam. And I just want to know what is your experience about it, and I'll come to a good, question of you guys for you guys to answer. So, someone who can just tell me more about it. Guys, Yes, okay, Sam. this is a good question. We have an off-road goggle for this, okay? Whoever answers, you have to choose. Yeah. So tell me first. Tell me what is your experience about Mumbai's Biker Mania, and anyone from there. The gentleman with the hat, red hat. See, when I enter the venue place, that's Okay. it. Because I came off road. Okay. That So you enjoy the experience coming here to Mumbai's Biker Mania. Biker Mania, Okay. reaching the spot. And what more did you experience? Like, what do you love about the place, the environment, and the entire? It's in the nature. Yeah. So you love that. How about the overall organizing, Yeah, the committee? that is a good. That is Yeah. good. So would you want to come back next year? Yeah, definitely. Yeah. Chapter 3. Sure. That's good. Can you handle the mic to somebody else? That boy with the cap, black cap. Yeah. इट इज़ माई फर्स्ट इवेंट ऑफ रोड इवेंट एंड आप सबने देखा रहेगा मैं क्रैश हुआ फर्स्ट इस पे, तो मैंने इतना एक्सेप्ट नहीं किया था कि सर ने मेरा लीवर्स ठीक किया, मेरा मिरर ठीक किया, भाई ने मुझे फर्स्ट एड दिया, बट बेसिकली मतलब क्विक आया, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ दिया, बट एवरीवन आस्किंग मी कि you What you want? So you're getting all the help needed. yeah, all the help Right. and again ऐसा नहीं कि मतलब मैं गिर गया हूँ तो बोला कि नहीं तू रेस कर मत ट्रैक कर, सबने मेरा So you got support from everybody around. हाँ सपोर्ट मिला, उससे मेरा एनर्जी डबल हुआ, मैंने अगेन कम्पीट किया, दैट इज आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट टीम टू सपोर्ट एंड एवरीथिंग, और उन्होंने ट्रैक मैंने देख रहा हूँ बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ उनको, मतलब पहले भी कर रहा हूँ और अभी उनका डेली रील्स देखता हूँ जो उन्होंने मेहनत किया, अजय भाई ने ट्रैक का डाला था, सैम भाई जो हर एक उन्होंने बनाया, मतलब लिटरली ये खाली एक ही थोड़ा सा बड़ा बनाया मेरे लिए बाकी का ओवरऑल इज नाइस और बेसिकली मैं आई एम अ शेफ, तो मैं फूड के लिए बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट फूड जो दिया था लंच. Thank you. Thank you. Yeah, Sam, what Sam, do you thank think? you. Who you think is the right person to be awarded? I think there are more people who want to talk about the event, so I will just pass it on. Yeah, we can. So I am basically attending this event for the second time. I was there on 8th and 9th March 2025 as well, which was somewhere at the next destination. Right. So first of all, thank you so much to Krunal bhai, Jigar bhai, Sam bhai, Poonam, who were always on toes, on call. मैं जब भी कॉल लगा था कृणाल भाई ऐसा हुआ है, ये ज़रूरत पड़ेगी तो होएगा. लास्ट टाइम जिगर भाई अपने टोस पे खड़े थे, कृणाल भाई टोस पे खड़े थे, बर्फ़ का इंतज़ाम नहीं हो रहा था सुबह से, तो लास्ट टाइम बर्फ़ मुझे रात को मिल गई थी, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. इस बार बर्फ़ विस्की में डाल के पिया तूने? हाँ विस्की में. इस बार बर्फ़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठंडी ऑलरेडी है, बट अ बिग थैंक यू. पिछली बार हम लोग 6 लोग आए थे,
वो 6 तो रिपीट है ही ये चैप्टर में, ये एडिशन में, सेकंड चैप्टर में। दूसरे 6 और आए हैं साथ में हम लोग के द व्हील्स एंड रोड्स में। मैं इस बार गाड़ी लेके आया हूँ, वो भी मैंने पहले ही परमिशन ली थी कि भाई मैं गाड़ी लेके आऊँगा तो गाड़ी का पार्किंग रहेगा, बोले हाँ रहेगा, तुम गाड़ी लेके आ जाओ। सो थैंक यू सो मच, अ बिग थैंक यू सैम भाई, कृणाल भाई, जिगर भाई, पूनम, दे वर ऑलवेज हैंड्स ऑन। कॉल पे भी जब भी मैं ऐसा बोलता था भाई 2 रजिस्ट्रेशन और करने हैं, तो एक्चुअली हम लोग ने 6-7 लोग पहले किए थे, फिर 2 ऐड हुए, फिर 2 ऐड हुए, ऐसे करते करते हम 12 हुए। एंड द प्राइज विच दे आर ऑफरिंग इन अर्ली बर्ड इज अनएक्सपेक्टेड। ये प्राइस में 3-4 बार का खाना, इतनी गुडीज, इतने प्राइजेज, ये कोई नहीं देता है। लास्ट टाइम मैं स्लो रेस में फर्स्ट आया था, आई वॉन अ हेलमेट विच वॉज एट MRP ऑफ 5250। मैंने कुछ 2500 या 2700 तो सिर्फ इसी के दिए थे, उसके सामने 5.25 का तो मैं हेलमेट ले गया था, प्लस 2 गार्डियन गियर की बैग्स दी थी, ग्लव्स दिए थे वेगा के। तो वो एक चीज़ है जो मोटिवेट करती है कि हाँ भाई प्राइजेस भी है, अच्छे हैं प्राइजेस, दे आर वर्थ इट, जितना भरा है उससे डबल ट्रिपल तो तुमको मिल रहा है। सो रियली थैंक यू वंस अगेन कृणाल भाई, जिगर भाई, पूनम, सैम भाई, थैंक यू सो मच। Great, great. Anybody else who wants to speak? Hi guys, hope everyone is doing absolutely great. I am here at Vahana store in Kandivali. Why? To get myself a new pair of riding boots. But उसके पहले हम एक बार वॉक अराउंड ले लेते हैं पूरे स्टोर का, देखते हैं यहाँ क्या क्या है एंड आप लोग क्या क्या ले सकते हो अपने लिए। लेट्स गो। And finally, my new pair of riding boots are right here. And I would like to take a minute and introduce Mr. Shubham, who is the owner of Vahana. You guys can come here anytime with any of your queries, riding boots, jacket, जो भी आपको चाहिए आपके specific ride के हिसाब से. He and his entire team will help you out. Now let me test it out and ride back home. Let's go. Hello guys, this is my first time event which has came to Mumbai Bikers Mania. In India, even today, अगर आपने बोला जाए कि बाइक राइडिंग है, so the normal psychology which goes is like Ladakh, okay, Ratnagiri, Lonavala, Panchgani, these are the trips. Mumbai's bike mania has brought a revolution, but dirt biking is literally came into the picture, and literally at present scenario it is literally needed for the foreign, if in case you're gone about the western countries where it is like dirt biking is like a normal phenomenon. In India, Mumbai Bikers Mania has brought this revolution, literally change in a psychology amongst all the riders, which is a basic necessity in today's generation for us, so that even we can compete at par. This is the literally the basic step which you have kept. Many riders would erupt henceforth in future, who we just hope that would just touch the sky high and see more stunts in a higher scale. So all the best, and literally we are just gonna see that it's gonna be more massive and a great. Thank you. What's your name? Vijit. And literally I'm thankful to Bhavin bhai and Vicky sir for just giving me this podium to just express my views. That's great. Thank you. Thank you, Vijit. Thanks for coming. I hope you all enjoyed. And Sam, you can go ahead. So what I would say is, Brendan, you choose who gets the goggle. Whoever spoke gets the sleeve. Okay? You choose what was the best answer. Give the goggle to them. Or if anyone wants to talk more, anyone else? Anyone else wants to speak? All right. So this is my first time attending the Mumbai Biker Mania event. I was talking to Sam that I've been to multiple such events, but what touched me the most was the management team out here. Literally everyone here, right from the time registration, sir आपने register किया कि नहीं किया? Okay. Sir आप जाओ lunch कर लो पहले. Right, events वगैरह होते हैं, but make sure you are having your food. Sir आपको tents allocate हुआ कि नहीं हुआ? Everyone is so polite, so much attentive. I mean, literally anywhere you go, people are acknowledging you. One very recent scenario, just a couple of hours back, one of my friend's bike got stuck there in the dirt. Sam himself came there, कि रुक जा भाई मैं निकाल के देता हूँ. And then there was one more person from the management team. The brake was locked. They cleaned it. God knows how, but they got it out.
So the acknowledgement from the team is something which is like highly commendable. So kudos to the team. Thank you, Sam. Thank you, everyone from the team. Good job by Three cheers, the guys. entire Three team. cheers. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Okay, anyone else? More? Soil bhai. Yeah, hi guys. This is the first time I'm attending Mumbai's Biker Mania, and I'm not speaking this for any kind of prize. I just want to share my experience that I've been riding since 2004, and I've attended many events. And since past at least 6 to 7 years, I haven't attended any events. Obviously, me and Ajay attended Pune Off-Road Expedition. Then, obviously, KTM organizes bronze, silver certification. So I was only one from Gujarat to do all the 3 events. But apart from that, those were for certification, and just to learn how to do off-road and all. But this event, I didn't expect it so much of fun. Like I said, not speaking for any prize. The arrangement and everything is really good, Sam. So Bhavin told me that Soil, you join anyhow and come on the KTM bike because of the off-road trail. That bike wouldn't suit the other one. So I'll just say that very good arrangement, and especially I was quite skeptic about staying in tent. बहुत सालों से tent में रुका ही नहीं हूँ, so everything was good, and the people here really fantastic people, and I'm looking forward next year मिलते हैं. So that's it. कुछ ज़्यादा butter polishing नहीं करना है. Fact बोल रहा हूँ. Really enjoyed. But tell them about the bikes you have, because you don't have just one bike, right? And why you bought the KTM over here? Yeah, I wanted to talk about it. People should understand that if you have a big bike does not mean you have to come and flaunt it. That's why I wanted to talk about it. Yeah, so I have a couple of bikes. At this KTM Adventure 390, started with Pulsar 150 DTSI. Currently I'm having Tiger 900 Rally Pro, this BMW GS8 1250, KTM Adventure 390, Classic 500 Desert Storm, and yeah, that's it. Just couple of bikes. Just couple of bikes. Just couple of bikes. Thank you. The game has begun. Okay, anyone else wants to talk quickly? Anyone? So big thanks to Mumbai Bikers Mania. I came last year and I learned off-roading. I haven't ridden off-roading before that, so it was my first time experiencing off-roading. And from them, for the last year, I've taken off-road as seriously, and I've attended events Ratnagiri. I've attended events in Jaipur or Pune and other states. But the management here, the execution here, the fun over here, I haven't seen it anywhere. So thank you, Sam. Thank you for all these guys who have been supporting me. Brendan, Najay, Swapnil, all of them have been teaching me all the crazy stuff right here in Motomania. So thank you, everyone. So what did you learn today? So you've been doing off-roading. We all Yes. have been training you. Yes. So what yes. did you learn today? Today I learned that though I am good at tracks, I need a lot to learn on the basic skills such as balancing and the other ones where we tow the bike. So how can I manage weight better? Correct. So these were the 2 things I'll take as a learning, and I'll take ahead till the next year. Okay, thank you. Anyone else? No one wants to talk about us? Was the Okay. event not good? No, I think we got a lot of people talking about it. I think you guys choose who should get the goggle, and then others get this The sleeves. guy in the green jacket? Yeah, he gets the goggles. And I think you. Congrats. Who and else spoke? Rush, and Rush, you can give the sleeves. You got the sleeves. Anyone else? Thank you. Someone, Soil bhai.
Kaustubh. That you have, but still you take this. Chalo, let's not extend more. Just last two. Okay, a quick thing. Today everyone enjoyed their lunch. What are the dishes for the lunch? Raise your hand, raise your hand. Okay, behind the girl. Yeah, that guy. Yeah. What was there for lunch? Introduce yourself. What do you ride? And yeah. Surely. My name is Parth Mehta. Okay, where are you from? I reside in Mumbai. Okay. And I currently ride a Domina 400. Okay. And the lunch was fabulous, of course, which is why I remember all of it. Okay, tell me. Starting with the fryams. Okay. We had cucumber salad, carrot salad. We had chicken masala. We had undiyu. We had chapatis, dal, rice, gulab jamuns for sweet dish. And we had a pickle at the end. What pickle was it? Mixed pickle. Perfect. Please give it to him, Sam. Thanks a lot. Last one left. Chalo, people are waiting, so let's finish up. We missed on. So guys, since you all enjoyed Mumbai Mania 2026, I just want to ask you guys, anyone wants to give us any feedback or like something that we missed out on, so that we could do something better for the coming 2027. Please raise your hand and be open and tell us, because this feedback will really help us in getting better and doing better, and getting more enthusiast in this. Like as he said, a lot of youngsters should come and participate, and should experience this and make it a culture in India, starting from Mumbai. So please. सर मैं आया हूँ बड़ौदा से और मैं Nice. गुजरात मोटर राइडिंग एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ. Nice. ओके. मुझे ये लगता है कि आपको ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो गुजरात में और स्टेट में भी करना चाहिए. जैसे बड़ौदा है, सूरत है, अहमदाबाद है, वहाँ पे भी ये कल्चर बहुत बढ़ गया है. मगर आपने वो मार्केटिंग नहीं. शायद मुझे एक मैसेज आया था मुंबई बाइकर मेनिया में से और मैंने उसका रिप्लाई भी दिया था, मगर अहमदाबाद में उसमें कोई जगह पे मार्केटिंग नहीं किया आपने. उसकी मुझे वजह नहीं पता चलती. वो बहुत बड़ा इश्यू है क्योंकि जो GRM है नेक्स्ट मंथ में गिर में हो रहा है और वो एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है. ऑफ रोड भी है और वो भी है. हाँ, लाइक IBW, मगर आपको करना चाहिए. Sure. Anyone else who wants to add? Yeah, so for me as well, I would request you guys to focus a bit more on marketing. I follow a lot of these biking pages, biking community pages on Instagram, but I got to know about the event from Santosh. So he was the one who actually let the group know, all of us on a WhatsApp community, that there is an event happening. We all should be part of it, participate in full swing. So just a bit more effort on the marketing side, maybe some sponsored ads, that would help. Thanks. Thank you. Hi guys, hope everyone is doing absolutely great. I am here at Vahana store in Kandivali. Why? To get myself a new pair of riding boots. But उसके पहले हम एक बार वॉक अराउंड ले लेते हैं पूरे स्टोर का, देखते हैं यहाँ क्या क्या है एंड आप लोग क्या क्या ले सकते हो अपने लिए. लेट्स गो. And finally, my new pair of riding boots are right here. And I would like to take a minute and introduce Mr. Shubham, who is the owner of Vahana. You guys can come here anytime with any of your queries, riding boots, jacket, जो भी आपको चाहिए आपके specific ride के हिसाब से. He and his entire team will help you out. Now let me test it out and ride back home. Let's go. Anyone else? I already told about that Goni. In one ride, we have to pick up that Goni and we have to keep on the bike. But it is making some scratches on the bike. That's why some of the
bikers, they are not participating in that event. Correct. You need to change that thing. I already told you. Sure. So adding to that, actually, we what we can do is since we had that what do you call relay for carrying the sack, we definitely will work on that, and we should come up with something better and much funny. Like more people should understand what is happening and take part and have a better. Nothing. Please, that girl wants to say something. Can you hand over the mic there? So we will definitely have something much interesting in the coming year. Thank you for your feedback, sir. Hey guys, if you like this event so much, I think we should start a reference program. Okay, whoever references more than 10 riders for 2027 version, they get their tickets for free. What do you think, Kunal? All in? So how many do we have here? 100 here today. So you reference 10 more people for next year, each one of you. We have 1,000 riders and you 100 ride for free. She's in marketing, right? Guys, on a serious note, touchwood, खुदा ना खास्ता आज कुछ नहीं हुआ, okay? So, अगर there were people to just take care of, but when we are talking about dirt bike, somewhere or the other safety does matters on an extreme stage. Just अगर उनको कुछ ज़्यादा ना होता, कुछ हो जाता, then literally यहाँ से hospital काफ़ी दूर है. Okay, if in case feasibility or kind of a things, in such kind of a situation, at least a nearby an emergency kind of an ambulance or kind of a thing should be made available so that at moment urgency पे basis पे कुछ resolve हो सकेगा. So we had kept it behind. We also had spoken to Cottage Hospital. Cottage Hospital में सब बता के रखा था that today is the event. If anything happens, we had 2 cars spare kept here on the ground. कुछ होता है तो जल्दी से फटाक से Cottage Hospital जा सके. So we had all that things were there on the back end. And दूसरा था कि yeah, we didn't announce that or we didn't do it, but we were ready. Like we had our first kit ready there. We had fire extinguisher ready there. We had Brendan who could help us in mechanics for anything if it's broken down. तो ये सब किया था हम लोग. बस शायद दिखा नहीं होगा because we were so busy in the whole event. आपको किसी को बताया नहीं था, लेकिन आपका सबका मेडिकल था, मेडिक्लेम किया हुआ था, इंश्योरेंस हर एक का किया हुआ था, जो 10 lakhs का था. Yeah, this is one thing which I think we did not disclose. Again, marketing section आता है इसमें, that every rider today had 1 day का insurance, which was for 10 lakh rupees, with bike covered on it. Every rider, it was in your ticket pricing, by the way. क्या करता पता है? Let's, when your turn comes, you talk about it, and we'll start giving turns to everyone. So, okay? Why? This last one, there's any hamper. Question, that's one question. So I finish with that. Okay, guys. Let's not extend more. Brendan, you do this when your turn comes, talking about what you do, and let's start with everyone. Yeah, and just that one hamper. Yeah, we'll have. You tell me when. Let the anchor take over now. Yeah. Wait, you tell me. You only start. You introduce yourself, what you do, and then you ask that question. Wow, this is trending abroad. How about me trending in India? Highway India. Highway killer. Bro, throwing out all your labels. Well, guess what? I've upgraded. Highway India. Highway killer. तो आई एम यंग और मुझे एक ही सजेशन देना था, फन साइड. जैसे मतलब आदिति होस्ट कर रही थी, जब बाकी लोग
कॉम्पीट नहीं कर रहे थे या एनीथिंग कुछ नहीं कर रहे थे, तो ऐसा कुछ करो कि मतलब अगर जो कॉम्पीट नहीं कर रहा उनके लिए स्मॉल स्मॉल लाइक फिटनेस में समथिंग काइंड ऑफ, और ये कर फन एक्टिविटी, मतलब नॉर्मल कोई ऑडियंस में से आ रहे बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग, तो उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ, तो इट इज़ एंटरटेनमेंट फॉर दैट। मतलब सब आके जस्ट देखना नहीं है, वो जिनको नहीं करना है वो इसमें आ सकते हैं, तो उनका भी एक समथिंग काइंड ऑफ मेमोरीज हो जाएगा। राइट। और एक बोलना था कि कल ग्रुप पे टाइमिंग आया कि आपको 11 बजे 10 o'clock आना है, राइट, आई थिंक सो। तो बहुत जन जल्दी आ गए थे और मैं भी जल्दी मैं 11 बजे आ गया था, और आई एम वेटिंग टिल 4 और 4:30। तो उस बीच में भी एक्टिविटीज़ थोड़े बहुत हो जा सकते, क्योंकि लिटरली सब लोग सो रहे थे, बस खाना वाना खा के सो रहे थे। तो मतलब उनका ऐसा, मतलब मेरा पर्सनली कहना था कि वो थोड़ा सा टाइम मेरा वेस्ट हुआ कि मैं वहाँ पे फन पार्ट कुछ कर सकता था, एनीथिंग नाचने लगा या डिप्स, एनीथिंग काइंड ऑफ। ये थैंक यू। Good feedback. Good feedback. So I think let's start with our thing. Brendan, you want to go first? Introduce yourself, and you have some question and a prize for someone, right? Yeah. So this is for all the people over here. These 100% goggles I'll be giving away. So I'll first tell about myself. My name is Brendan, and I actually ride dirt bikes and I race dirt bikes. I train people also how to learn how to ride dirt bikes and get into the field of off-road. So whoever wants to reach out, you all can please reach out to me. Yes, sir. Anything? Yes, sure, please. So just to be familiar and tell you guys, I've been racing since 2005. I was racing dirt bikes since then, and that time the culture was still open. A lot of people used to race from Mumbai, which many of you didn't know. A lot of guys used to race in the past, and we have a body in India that supports this. Many of you don't know, so I would want to know if any of you have an idea what is the name of that body. What are they called? No, sorry, not Kostup. Anybody else from this group? Okay, so since I said I'm racing in dirt bikes and supercross and motocross and all in India, we have a body that supports racing in India for motorsports. So I want to know the name of that body that it's called. The name. Yeah, it's. Give the mic. Razor. Give the mic. Give the mic to him, please. It is, I think so, IRCL. It is happening in Pune. Yeah, that is ISRL. That's International Supercross Racing League. That is only the racing league. I'm talking about what is the name of the body that supports the racing league and the national racing that happens in India. I guess it is FMSCI. Introduce your name, please. My name is Amar Singh. Yeah, and can you tell me about yourself first? So basically, I've come with Mr. Saurabh here. Okay. So I actually wanted one of. Yeah. So I would want one of the new riders who don't know about it. I mean, please. I have never raced, so I'm not into racing or anything. Right. But I have some knowledge. Very true. Yeah, I'll come back to you, sir. Please wait. I don't know the full name, but I think it's Federation of Motocross Motor. Okay, Club what's the initials? FMCI. Okay, you're very close to it. FMCSI Sports Club Federation. You're very close to it. Anybody else? Federation of Motor Sports Club India. Okay. So he's actually right. It's FMSCI, and what he said, it's known as FMSCI. So right now, FMSCI is also collaborated with FIM, International Motorsports, Federation of International Motorsports. So India is right now doing well, and that's the reason why ISRL has come in the picture. So hats off to the ISRL team who's doing a great job and getting this sport and growing the culture in India. So please, guys, you are the people who will take this culture ahead, like he said earlier, the dirt culture, and for everyone to, yes, for sure, Sam. The one who said Federation of Motorsports India, yes.
Absolutely a right answer. And sir, I'm extremely sorry. If there's something you can give him an hamper, it will be nice. And guys, please, it will be a great support if you all guys come up and come for this next season 2027. Will be lovely. And please call all your friends who's interested in motorbikes and everything. Yeah, thank you. Yeah, that's true. That's true. Because that's how we'll grow, right? Because end of the day, what are we looking for? People to ride right. If they ride right, that's how it will grow. The community will grow. So definitely. Exactly. And if you notice the track also, see, all of you all ride, right? You almost have done millions of kilometers, all right? But is this something different? Yes. The terrain is completely different. You all understand how to articulate the bike and everything, right? So if you're all on the corners, you must have seen we were telling you all articulate the bike, get your leg down and everything. So that's how you will learn. So you'll need to go for more of these programs where people teach you. Even here, Sam also, we all teach, all right? So come to us, come to people who do all these trainings, learn from them more, and that's how you evolve. Yeah. Cheers. Okay. 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 So, Saurabh, so you're into drag racing and plus you're a stunter, right? So, what's your record like? Like, what's my record? So recently I clocked 8.6 on 8.7 on fastest wheelie. So yeah, on Jigsaw 1000. So you guys must be knowing Valley Run, Vroom. So these are the events going on. So मैं देख रहा था अभी बहुत से गुजरात में भी मोटर स्पोर्ट्स का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को ज़रूर बोलूँगा कि एक गुजरात में ड्रैग रेसिंग का इवेंट होना चाहिए यार, ग्रैंड लेवल पे होना चाहिए यार. गुजरात में इतने ज़्यादा मोटर स्पोर्ट्स के फैंस हैं, मेरे को देख के ही अच्छा लगा बहुत. या 100%. और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है. मैं बात कर रहा था माउंटेन सीकर्स से, तो बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट का एक फेडरेशन है राइडिंग के लिए और उसके अंडर बहुत से राइडिंग ग्रुप्स काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी सोच है. और ऐसे ही सबसे इंडियन जो राइडिंग कम्युनिटी है वो आगे बढ़ रही है, तो हर एक स्टेट से ऐसे जो योगदान है वही बाइकिंग कम्युनिटी को और मजबूत हो रहा है. वो इंडिया बाइक वीक में मैंने देखा और ऐसे सब राइडर्स से ही इंस्पिरेशन मिलता है यार, बहुत अच्छा. और भी बहुत मैंने बात किया माउंटेन सीकर्स से, बहुत एंथुजियास्ट और पैशनेट सब ग्रुप है, तो अच्छा लगता है मिलके. Super. So, an applause for all of them. Thanks a lot. नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है, यानी गरुड़ा गेमिंग लाइव करके मेरा एक चैनल है जहाँ पे गेमिंग करते हैं हम लोग और मोटो व्लॉगिंग, लाइफस्टाइल ऑल इन वन. और हमारा बूट कैम्प भी है इनफेमस माफिया करके, बांदिल की जिनको पता होगा, श्रीमान लेजेंड, तो उस टीम से हूँ मैं. और अभी मोटो व्लॉगिंग भी हमने बहुत ही टॉप लेवल पे चालू किया है और बहुत सारे कोला वगैरह हो रहे. तो ये इवेंट लास्ट टाइम जब हुआ था उस टाइम मैं आने वाला था, पर मुझे थोड़ा सा काम की वजह से आ नहीं पाया. पर मेरी टीम आई थी, मेरे दोस्त लोग आए थे, उस टाइम भी मैंने देखा था बहुत अच्छा आपने इवेंट किया था. और ये टाइम तो उससे भी बढ़िया है. और जिन से मैं मिला आपके जो ऑर्गेनाइजर से, तो एक बात मैंने देखी कि आप सब लोग पैशनेट हो इस डर्ट रेसिंग को लेके या ऑफ रोडिंग को लेके. क्योंकि मैंने अभी तक जितने इवेंट देखे तो ऑफ रोडिंग का कोई करता नहीं, उसमें भी डे एंड नाइट जो आपने अभी ये यानी लॉन्च किया है अलग ही, तो देख के बहुत अच्छा लगा. और सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पे 70 to 80%
लोग जो आए थे राइडर्स वो बिगिनर्स थे और उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुंबई बाइकर्स मेनिया इन्होंने दिया है, तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लगता है कि ऐसे इवेंट और भी हो और आप लोग ऐसे ही इनको सपोर्ट करें कि जिससे हमारा इंडिया का नाम बाहर भी लोग पहचाने और गौर से ले। बाकी आप सबको आपकी जो पावर देखी मैंने वहाँ पे, यानी मैं ऊपर था, कि एकदम जुनून से आप लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और जो भी खुशी थी देख के बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा। हम लोग सब है ट्रेन करने के लिए, आप आइए। अभी थोड़ा सा फिटनेस का विषय इसलिए, पर बहुत मज़ा आया और यहाँ के गांव वालों ने भी जो सपोर्ट किया ना, बहुत ही ज़बरदस्त था। मैंने देखा है ना गांव वाले भी, यानी जिनको ये तो पता भी नहीं होगा जो भी क्या है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, पर फिर भी एकदम इंटरेस्ट से देख रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, साथ में हम लोग भी है, ये सब बाइकर्स भी है, राइडर्स भी है। मिलेंगे नेक्स्ट इवेंट में और अच्छा लगा आपने बुलाया। लास्ट टाइम मैं पार्टिसिपेट करने वाला था, आज डायरेक्ट स्टेज पे, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम इनके साथ रहूँगा। बाकी बांदिल की Hello everyone, my name is Santosh. Actually, apart from this riding passion के अलावा I own an accessory shop with the name of MTS Accessories जो न्यू मुंबई में बेस्ड है, one in सांतपाड़ा, वाशी and one in कलम्बोली। और ये ज़्यादा बात करूँ बाइकिंग की, ये तो मेरा पैशन है और मैं बताऊँगा ये इवेंट भाई वाइब है, मज़ा आ गया सच में। शायद से सबने जैसे एंजॉय किया सेम मैंने एंजॉय किया, मज़ा आ गया। पार्टिसिपेट भी किया मैंने, आई रियली एंजॉय अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। तेजस, I was calling you so many times, you know. तू कुठे गेलेला? खाना खा रहा था। Hello everyone, my name is Tejas Rane, aka Motovlogger Tej on Instagram. So मैं छोटा मोटा कंटेंट बनाता हूँ और उसके बेसिस पे इन्होंने मुझे बुलाया है। सो फर्स्ट मीटिंग मेरा समीर, कुणाल एंड पूनम थे, तो उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया कि ये इवेंट क्या होता है और जिस पैशन से वो लोग एक्सप्लेन कर रहे थे और बता रहे थे पूरे चीज़, तो मुझे लगा कि इधर आना चाहिए। और मैंने जब यहाँ पे आया और देखा सब ये चीज़, तो आई वॉज अमेज कि मतलब लाइक बिगिनर को इतना अपॉर्चुनिटी मिल रही है करने के लिए। और मैं खुद एक क्रूज़र बाइक लेके आया था एंड वो बाइक लेके मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करे। मतलब इतना कॉन्फिडेंस मुझे भी नहीं था। मैं टूरिंग करता हूँ, तो एडवेंचर ट्रेल में और ऑफ रोड में ये सब मैं कर सकता हूँ विथ क्रूज़र बाइक। इतना कॉन्फिडेंस मुझे आया, तो मतलब बाकी लोगों को भी कितना कॉन्फिडेंस आया रहेगा। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और आई थिंक ये और बड़ा होगा, डेफिनेटली होगा, बिकॉज इसका अवेयरनेस और बढ़ेगा जब हम लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ डालेंगे। और लोगों को समझेगा। मुझे भी नहीं पता था, मैं मतलब मुंबई साइड में रहता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि धानु में भी इतना अच्छा ट्रैक है और अपन मतलब ब्रेकफास्ट राइड करके भी यहाँ पे आ सकते हैं और बहुत सारे मतलब ऐसे ऑफ रोड ट्रेल्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अभी समझ में आ रहा है और भी लोगों को समझेगा जब हम लोग इसका अवेयरनेस और करेंगे और नेक्स्ट टाइम इससे भी बड़ा इवेंट होगा फॉर श्योर। बट ऑनेस्टली वेरी थैंकफुल टू यू गाइज। आपने एक लेवल पे हम लोग को पहुंचाया। लाइक वी आर अ वेरी स्मॉल टीम और स्मॉल टीम से एक विजन के साथ है। कुणाल का भी एक विजन है कि जैसे आप लोग सब लोग ने देखा कि सारे न्यू कमर्स है, देयर आर फ्यू पीपल हु आर राइडिंग ऑन द ट्रैक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो योर सपोर्ट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर दिस टू रीच आउट। अभी दादा you did yesterday only you posted, but still it went as a very viral video as well. Your community is completely different in this area आणि सगळ्यांनी म्हणजे फॉलो करून सगळ्यांनी सांगितलं सगळे. So thank you very much each one of you for supporting this event and we look forward to this collaboration every year. We would like you guys to be a part of us. Yeah. Ganesh, okay. So my old friend Ganesh, he is from Ethnosphere. एक चीज का मेरे को थोड़ा सा लगा कि we were so busy in our track
Bichara Ethnosphere, they had kept a stall there. They had so many beautiful products. If you have time now before they close, एक बार जाके देख के आओ क्या करते हैं. So basically, I'll let Ganesh talk about it. Thank you. I saw that people have spoken about उनका कैसा पाथ रहा है, कैसे आए हैं. So I come from a riding background, starting way back in 1999. मैंने कास्टाइन से अपना बाइकिंग का करियर शुरू किया था. 2004 में मैं लद्दाख गया था. तो तभी का लद्दाख और आज के लद्दाख में ज़मीन आसमान का भी फर्क है. But more than that, again, this passion. अच्छा, before even going further, how many are following Dakar here? कितने लोग डकार देख रहे हैं, follow कर रहे हैं? Do you know the last person Indian who exited the Dakar as of yesterday? नहीं. जतिन जैन, उसका इंजन का अल्टरनेटर फेल हो गया, तो इसलिए उसको भी डकार छोड़ना पड़ा. He didn't have any choice. I and Jatin go back by 20 years. 20 साल पहले से हम लोग साथ में राइड करते हैं. That is the kind of background I come from. I'm sure many of you know Vishak Narkar, many of you know Jay Maverick. These are key names in the dirt and desert storm circuit today in India. So these are the people with whom I have grown up learning how to ride, the rides that I have done. And that was the passion that drove me to set up Ethnosphere. 2018 में मैं कई जगह कई देशों में घूम के वापस जब इंडिया आया तो मुझे लगा कि यार बाहर बहुत कुछ मिलता है, अपने यहाँ कुछ नहीं मिलता है. So we need to have the right kind of gear, and I would like to say you guys did a great job modulating the events, ensuring that लोगों ने कम से कम shoes पहन रखे हैं, लोगों ने helmets proper पहन रखे हैं, which is a very important aspect. I know a couple of crashes happened today. Please be careful. And I myself am a crash survivor. मेरे shoulder में plate लगा हुआ है, and it was gear that saved me. You will be surprised. I crashed at 140 kilometers an hour, and when I stood up, after that crash I stood up. I picked up my bike. When I tried to pick up my bike, my shoulder told me it is broken. Otherwise, मेरे पूरे body में खर्चा एक खरोच नहीं था. The only reason for that was good gear. And my suggestion: ensure that you are investing slowly, gradually, but in good gear. And ensure that you are learning all these skills in the right way. That is what is required, and these guys are providing a brilliant platform to do that. And please support this team. Ensure that you are attending, learning from these guys, and taking the culture of off-road riding, culture of doing trails, doing any kind of technical riding to the next level. We have a lot many Jatin Jains and Takales here, I am sure, who can take the concept of India and the ability of Indians to compete in races like Dakar. Please do that. Thank you very much. Is Gaurang here from Motul? Please come on the stage, please. Shubham is here. So, hello everybody, I am from Motul, and I thank you for your participation, and I am very humbled that Mr. Sampreet ji, Poonam ji coordinate with us very well, and I would like to thank you, our authorized distributor of Palghar district, which is Mr. Inam Warsi. His firm's name is Warsi Distributors. So thank you all.
हेलो माय नेम इज शुभम आई एम फ्रॉम वाहना स्टोर आज 2 बजे के आसपास मैं निकला था स्टोर से यहाँ पे आने के लिए टायर पंचर हो गया आते आते लेट हो गया 8 बज गया 3-4 घंटा हम लोग टायर वाला ही ढूंढ रहे हैं हमको टायर वाला नहीं मिल रहा है आगे का टायर पंचर था ट्यूबलेस नहीं था ट्यूब वाला था बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड था बट एक बार यहाँ पे आया और जिगर भाई बोले कि एक राउंड तो मार के आ जा एक राउंड मार के आया और सब फ्रस्ट्रेशन निकल गया मैं कुणाल को सैम को जिगर भाई को मैं अभी 4-5 महीने से देख रहा हूँ उन्होंने इतना मेहनत डाला है इवेंट पे और उस हिसाब से इवेंट हुआ भी अच्छा उतना और उन्होंने बहुत मेहनत ली है उनके इतने डिस्कशंस और इतने मीटिंग्स इतना उनका खर्चा हुआ है और डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ यहाँ से उन्होंने कुछ भी कमाया नहीं है उन्होंने अपने जेब से ही डाला है जो भी डाला है इतना ये सब चीज़ें ये प्राइस में डिलीवर करना इज़ नॉट पॉसिबल सो बाकी मेरा स्टोर है सो वी हैव डिस्काउंट कूपन्स जो जिन्होंने बुक किया है उन लोग को 10% ऑफ है अभी से 3 महीने तक आप स्टोर से ऑर्डर्स मतलब खरीद सकते हो या फिर आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो आपको बस टिकट दिखाना है आपका कि आप यहाँ पे आए हो और आपको 10% फ्लैट ऑफ है वी डोंट हैव अ वेबसाइट राइट नाउ इट्स नॉट रनिंग बट वो लाइव हो जाएगा बाकी आप इंस्टाग्राम के थ्रू डीएम कर सकते हो आपको जो भी गियर चाहिए जो भी चाहिए आपको आपका टिकट भेजना है कि आपने यहाँ पे आए थे एंड यू विल गेट फ्लैट 10% ऑफ थैंक यू Finally back on stage. Thank you so much. I think it is lovely having all of you guys here. It's lovely knowing a lot of things from you guys. Thank you. Thank you so much. Sam, एक feedback मैं देना चाहूँगी. Next time अगर तुम बाइकर्स मेनिया रख रहे हो तो पहली बात ऐसे कोई सीजन में रखो कि इंसान ठंडी सर्वाइव कर सके. हम जैसे लोग The problem is last year थोड़ा गर्मी में किया तो गर्मी लगा ठंडी में गया तो ठंडी किया अगली बार बारिश में करना बारिश में करना वही लोकेशन पे जहाँ पे तूने वो नीचे वो वैली वाला सीन किया था जो हम देख नहीं पाए थे तो वही करना हमको चलेगा अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक बाइकर्स मेनिया चैप्टर 2 2026 presented by the Brotherhood of Mumbai and sponsored by Sutra, Monster Energy, Vahana Stores, Ruchi, Paint King, Ethnosphere, the Gym Culture, Devi Krupa, Motul, and of course Motomania. I think this chapter 2 has been a great success. I think all of you will agree to that. एक बार जोरदार तालियां बजा के prove कर दो कि it has been a great success. Apart from that, all your spot prizes जो आपको मिले, they were sponsored by Vahana Stores and MTS Accessories. So we are grateful that you all have been of this great support to Bikers Mania 2026 Chapter 2. With that, I would like to move on to the prize distribution. पर उससे पहले